हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल है आप लोगों का? हाउ आर यू ऑल? I'm glad to be back with you every day morning at 10 o'clock. Smog or no smog, fog or no fog, and whatever may be the air quality of Delhi, AQI, air quality index, we will stop. Learning should never stop. Learning should never stop. And kurta season is going on. Kurta season is going on. Many of you guessed it right. Many have written different colors, but sooner or later you will find all the colors. ठीक है? And let me read the messages. Some amazing messages. Uh, yeah, one of our students, that is Sarjana Rathore, national champion. Sarjana Rathore. She was already a champion. ये अच्छी बात है कि हमारे स्टूडेंट बन गए। मैं हमेशा क्रेडिट स्टूडेंट्स को देता हूँ। ठीक है? एज ए गुरु, एज ए एजुकेटर, एज योर टीचर, माई जॉब इज़ ओनली टू शो यू द वे। करना अपने है। और जो भी कोई बच्चा बनता है, इट इज़ लाइक दैट सीड। उस दिन मैंने सीड का आपको एग्जाम्पल दिया था। वो सारा इकोसिस्टम सीड के अंदर है। सारा इकोसिस्टम सीड के अंदर है कि फ्लावर्स कैसे होंगे, ये हाइट कितनी जाएगा, इसके पत्तों का कलर कब होगा, कब इसके पत्ते गिरेंगे, कब पैदा होंगे दोबारा, और ये कितनी चिड़ियाओं को ये जगह देगा। ये सब सीड के अंदर ऑलरेडी फिट है वो पूरा, प्रोवाइडेड somebody nurtures the seed, somebody waters the seed, give good soil. ऐसे रोड पे फेंक दोगे तो पेड़ नहीं बनेगा। ऐसे कहीं फेंक दोगे, छोटा मोटा पेड़ बढ़ेगा, कोई गाय बकरी खा के चली जाएगी, नहीं बनेगा बड़ा। यू नीड टू नर्चर, बट है वो सीड के अंदर, वो सीड के अंदर है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ वो आपके अंदर है। इट्स देयर इन यू। ठीक है? Sarika Singh, just a little note to say a big thank you, as a special as you are for our far and few. Thank you, you have done, and for making so learning fun. Thank you for your time and helping me shine. Thank you, Sarika. Thank you, Mehak. महक त्यागी। अभी सब अच्छी इंग्लिश में बोल रहे हैं। कुर्ता सीजन है, अलग अलग कलर की इंग्लिश। सर, योर न्यूज़पेपर एनालिसिस कंप्लीट्स आवर डे लाइक अ बिंदी कंप्लीट्स अ गर्ल्स अटायर। अच्छा, वेरी नाइस। महादेव मोहन यादव, लड़कों का सही है। जय हिंद सर, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बॉयज़ का जनरली ऐसा ही रहता है। देन वी हैव एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी। गुड आकाशदीप। वैष्णवी इज हियर। जय हिंद, राम राम, गुड मॉर्निंग। मेंटर इज अ सोर्स ऑफ लाइट विच एरेडिकेट्स डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइफ। दैट इज आर्यन यादव। मुदस्सर शेख, गुड मॉर्निंग। आशीष, good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. Very good, Ashish. So thank you very much, बच्चा पार्टी। सरजना राठौर वर्ल्ड चैम्पियन बन गई है, इंडियन चैम्पियन, एंड शी वॉज ऑलवेज वेरी गुड। मैंने उसको साहस कैंप में भी देखा, एंड ऑल्सो BOCC कोर्स। गुड मॉर्निंग मनोज तामता। Hari Mohan is our student. 4 kilometer run in 20 minutes exercise, took shower and breakfast, and now here. Very good, Hari. Yellow color is the best. Somebody said yesterday, sir, color yellow पहन ले रहा है, तो मैंने आज फिर yellow color निकाला। Shishti Pandey, Jai Hind sir, conferenced out in my first attempt, not losing hope, will go again. That is the spirit. That is the spirit, Shishti. You crossed the first hurdle, that is, you got screened in, you went through your paces, you did your best. Introspect karo, and get in touch with me and my team, and we are always here. We are always here to take you through your journey. जय हिंद अतुल, गुरुदयाल यादव, सुशांत जोड़ाप्ते। आपको देख के कॉन्फिडेंस आता है और एनर्जी आती है। सो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे लिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हो। थैंक यू। विजय खम्मा घानी, अमन शर्मा, जय हिंद, जय हिंद। पल्लव झा, yesterday I was talking to my boss and he said you are a very balanced person, Pallav. How so? I replied, it's all because General Yashmor, and he also subscribed to a channel. We are going international, Pallav. Thank you very much. We are going international. Pehle we had a student in BOCC course. He used to take classes from UK. He was the UK police, Indian guy. He used to take class from UK. And sometimes when he's on duty, he used to show us also. I used to say, दिखाओ अभी वहाँ पे क्या हाल है, हवा कैसी है, how's the sky in UK. And we also had a student from Singapore. We had a student from Japan taking the communication course. Very good, Pallav.
Shivam Pandey, everyone is opening 14-day SSB coaching, but your course is life changing. And the way you teach, your motivational words can make any person successful in any aspect. मैं तो यही कहता हूँ शिवम, अफसर बनो ना बनो, अच्छे इंसान बन जाओगे. अफसर बनो ना बनो, एक अच्छे इंसान बन जाओगे. यही हमारा एम है, यही हमारा एम है. और जो अच्छा इंसान होता है वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाता है. New BOCC course, you will get the notification today. You will get it today, the notification. And I'm also planning to give you a little Diwali gift to everyone who enrolls on this BOCC course. ठीक है, वो आपको जब पोस्टर निकलेगा, मैं भी सरप्राइज निकालना नहीं चाहता. Just finished reading Sapiens. Suggest a good book which Sapiens के बाद सीधा चले जाओ Homo Deus and 21 lessons for 21st century. यही रखी हुई ये. You can go after that. You can go to this book since you're following Yuval Noah Harari. But I'm very disappointed with his stand on the current Israeli actions in Gaza. I'm very disappointed. I used to follow him. I still follow him, but he appears to be totally one-sided. For a person of his stature, I thought he will speak something better. But ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं जिंदगी में. गुड मॉर्निंग, जय हिंद, शुभांशी, रोहित, यशराज, जस्टिन जॉनसन, सोर्स ऑफ एनर्जी, थैंक यू, योगेश, सुमेध, जय हिंद. पॉडकास्ट ऑन इजराइल इशू. मेरे हर एपिसोड में हर एपिसोड के अंदर आपको जो है जीडी के पॉइंट्स मिलेंगे, आपको लेक्चरेट के पॉइंट्स मिलेंगे, आपको लॉजिकल तरीका सोचने का मिलेगा, एंड मैनी पंच लाइंस. अगर आप यूज़ कर दोगे वहीं से मूवमेंट ऑर्डर देंगे. वो वेट नहीं करेंगे, फिर कहेंगे यार ये तो हमने सुना ही नहीं कभी, ये कौन ऐसे बोलता है. ठीक है. Akshat got screened out in first attempt. Now second attempt, full edit, very good. So Ikigai, the happiness of always being busy. Sir, being more and more podcasts which are, या आपने पॉडकास्ट देखा होगा मेरा कतर के ऊपर जो पॉडकास्ट किया मैंने. लॉट ऑफ पीपल आर नाउ सेंडिंग मी मैसेजेस कि सबसे बैलेंस पॉडकास्ट है. और आज हमारे एक एक्स एम्बेसडर का भी आर्टिकल आपको पढ़ के बताऊंगा. Attending live for the first time. Earlier I used to watch recording. Thanks, I feel grateful that I got a teacher like you. That is Harsh Arora. Thank you, Risu Kumar. You are my inspiration, sir, to join armed forces. Thank you very much. Rashika Khantwal, sir, do you have the book Arundhati Roy, Name of God? Yes, I have read this book. I don't have the book, but the God of Small Things, one of my most favorite books. Arundhati Roy is one of my most favorite persons. Arundhati Roy, Shashi Tharoor, अपना ये गुरचरण दास, अरविंद अडिगा, ठीक है. देन बागची, सुब्रोटो बागची, उनकी भी एक दो किताबें अच्छी हैं. ही फाउंडेड द माइंड ट्री, ठीक है. एंड मैनी ऑथर्स, इंडियन ऑथर्स. हाउ मच वी नो. चलो अभी स्टार्ट करते हैं. BOCC कोर्स बहुत बढ़िया कोर्स है, आपकी लाइफ चेंज कर देगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको. ये आपकी लाइफ चेंज करने वाला कोर्स है, बेसिक ऑफिसर्स कम्युनिकेशन कोर्स. एंड आई कैन सी नाउ, जिसने पहले किया 1.5-2 साल पहले, अब भी वो बच्चे भेजते हैं. व्हेन दे विन अ डिबेट कंपटीशन, व्हेन दे विन एलोक्यूशन कंपटीशन, व्हेन दे आर ऑन द स्टेज, उनका एकदम लाइफ चेंज हो गई है. फ्रॉम शाई, टिम्बिड, सबमिसिव, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, सेल्फ एश्योर्डनेस. एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं कभी ऑफिसर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कहीं नहीं आपको मिलेगा ये क्वालिटी, कोई नहीं लिखता ऐसी चीज़. हम OLQ लिखते हैं क्वालिटी को. सेल्फ एश्योर्डनेस. एन ऑफिसर मेल और फीमेल हैज़ अ सेंस ऑफ सेल्फ एश्योर्डनेस इन पब्लिक, इन स्कूल, एट होम, एवरीवेयर. सो दैट सेल्फ एश्योर्डनेस इज वॉट which I keep teaching you about. Thank you. This is Vaishnavi. I don't know whether I should tell you or not. I was dancing in the kitchen and accidentally broke crockery plate. Now from 9:30 onwards, I am on terrace. So my mother she scolded you naturally. थोड़ा बहुत scolding, roasting बहुत अच्छा होता है. It is good for health. थोड़ा बहुत मिल जाना चाहिए डोज. गुड. पम्मा जट, वेरी गुड. प्लीज़ वॉच दिस सेशन. अभी शुरू करेंगे हम.
यस प्रक्षित, यस पहले यही प्रॉब्लम है। हम जो है ना, प्रक्षित जो कह रहा है, हम जो बैलेंस्ड है आजकल उसको लेफ्टिस्ट बोल देते हैं। अगर आप सही बात बोलो आपको एंटी नेशनल बोल देते हैं। ये बड़ी समस्या है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो और चलो लेट्स स्टार्ट। मैं तो क्वेश्चन लेने लग गया, ये बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द एयर पोल्यूशन। दिस विल रिमेन फॉर फ्यू डेज, फिर ये हमारे मानस पटल से पीछे हट जाएगा, फिर हम नए मुद्दों पे आ जाएंगे। इलेक्शंस आ रहे हैं स्टेट्स के अंदर, इलेक्शंस का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ये सब। बट सुप्रीम कोर्ट से स्टॉप क्रॉप बर्निंग नाउ, लॉन्ग टर्म प्लान विल फॉलो सुप्रीम कोर्ट टू स्टेट्स अराउंड दिल्ली कि ये पैडी क्रॉप ऑल्सो कैन वी स्टॉप पैडी कल्टिवेशन इन दिस एरिया। ये भी एक मुद्दा है। इट इज नॉट ओनली एयर पोल्यूशन, ऑल्सो द अमाउंट ऑफ वाटर वी यूज पर क्विंटल ऑफ पैडी दैट वी प्रोड्यूस। सो एंड ये मैंने पानी के ऊपर जितना मैं जिक्र करता हूँ कोई नहीं करता है। वाटर, वी आर ए ह्यूजली वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। अब नहीं जागेंगे तो आगे जाके बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि पानी नहीं है हमारे पास। नीचे का पानी हमने इतना ज़्यादा खींच लिया है कि ऑन वन साइड द एंटायर वर्ल्ड जितना पानी वो जमीन से खींचते हैं उतना अकेला हमारा देश खींचता है। जितने लोग दुनिया भर में रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, पूरी दुनिया, हम कितना हिस्सा है दुनिया के पॉपुलेशन में तो बल्ले बल्ले है, बट लैंड साइज एंड रोड्स का साइज कितना हमारा दुनिया, बहुत छोटा होगा। बट वी लूज मोर पीपल ऑन इंडियन रोड्स देन द एंटायर वर्ल्ड पुट टुगेदर। सो ये कुछ चीज़ें हैं विच शुड give you a pause and think. Now long queues, stretched staff inside clinic in Delhi is most popular. तो खांसी गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अमीर ने तो लगा लिया, वो एयर फिल्टर लगा लिया, दरवाजे बंद कर लिए, they'll go on holiday. Many are saying भाई अभी से आगे से विंटर में 1 महीना गोवा चले जाएंगे। I hear my friend say this, यार हिमाचल चले जाएंगे, मैंने कॉटेज ले लिया वहाँ, या नैनीताल चले जाएंगे 1 महीने के लिए जब दिल्ली में ही है। बट गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जिसने रोज़ रेडी लगानी है, जिसने रोज़ सब्जी बेचनी है, जिसने ओला, उबर, ऑटो, ब्लिंकिट और ये जोमेटो, स्विगी में काम करना अपनी बाइक लेके, वो कहाँ जाएगा? सो लॉन्ग क्यूज ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन विद कफिंग एंड ये जो है सिचुएशन है। नाउ मैक्सवेल प्लेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। आई डिडंट वॉच द मैच। मैं तो जब ट्विटर पे देखना शुरू किया, फिर मैंने रात को हाइलाइट्स देखे, देन आई सॉ द हाइलाइट्स, बट हाइलाइट्स आर हाइलाइट्स, सो बट आई हैव नो रिग्रेट, बट दिस इज ग्रेट। दिस इज अगेन नेवर से डाई। क्या है ये एटीट्यूड क्या है? जो मैक्सवेल का एटीट्यूड था, ये क्या था? नेवर से डाई एटीट्यूड। 91 for 7 and you go on to win a match and your batsman, your partner scores some 10-12 run in 68 balls and you score a double century, 100 and some ball. तो मतलब कुछ तो चाहिए। This inning reminds me of a great innings played by Kapil Dev in the 1983 World Cup against Zimbabwe. इंडिया की हालत इससे भी खराब थी। I think 4-5 विकेट गिर गए थे 24-25 रन पे, and then walked in this Haryana hurricane and he hit the ballers all around the park. So that was this. Now there are few more interesting things. Seizure of journalists' devices, serious matter. A lot of raids taking place on journalists across India, and these are, so their devices are taken, their laptop, their phone are taken. So Supreme Court says कि ये कैसे लेके जा सकते हो आप? They are journalists, they have sources, they have telephone number, who are the people informing them? So this, but they have been taken. So there may be some guidelines on this little later. But what I want to bring this news to you is this: the caste survey, caste census or survey which Bihar had, उसका economic part अभी तक release नहीं हुआ था. They were still probably calculating. That has come down, and this is very shocking. ये शॉकिंग है जिनके लिए, जो कह रहे हैं कि अभी हम सुपर पावर बन गए, 2047 में विल बी डेवलप्ड कंट्री एंड बाय एंड ऑफ सेंचुरी विल बी वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री एंड आवर इकोनॉमी विल ओवरटेक ऑल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. पीपल विल कम टू अस, वी विल टीच देम. तो ये जो इस टाइप की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चलता है, उसके लिए ये है. दिस इज 1/3 ऑफ बिहार लिव्स ऑन ₹6,000 और लेस पर मंथ. 6,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा पे 1/3 बिहार रहता है. ये तो आप सोचो, बिहार
Same must be state in UP. Same must be Madhya Pradesh. Same must be Chhattisgarh. Similar must be or around Rajasthan. ठीक है. So Jharkhand. So this entire belt which occupies maximum population of our country. This is the status where more than a third of Bihar's families live in around less than 200 rupees a day. वेजर 800 रुपये लेता है. जो डेली वेजर ईंट उठा के इधर उधर काम करता है, जिसका कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं आता उसको, ही इज ओनली मैनुअल लेबर, गेट्स 800 रुपीज अ डे. बट 1/3 फैमिलीज इन बिहार लिव्स लेस देन 200 रुपीज अ डे. सो ये इस पर आगे भी बात करूँगा, इसके एनालिसिस है आगे, उस पर भी थोड़ा सा आपके साथ जिक्र करूँगा. एंड one interesting story, I always bring very interesting stories, is this chess in the family. After Prague, his sister moves to challenge world chess champion. तो brother sister दोनों वैशाली and Paragananda, you know, he fought for the world championship, lost in a very close match. Imagine both brother and sister going on to be or challenging the world champ. बहुत interesting, inspiring story है from तमिलनाडु से. कल मैंने आपको स्टोरी बताई थी किशनगढ़ राजस्थान की, जहाँ एक क्लाइंबर स्पेंड 200 days in hospital and wants to go to Annapurna again. He wants to go there again. बिहार कास्ट सेंसस पे थोड़ा और बता दूं आपको, थोड़ा और, that more than 34.13% live on less than rupees 6,000 or less. And 6,000 is poverty line in Bihar. 6,000 रुपये पॉवर्टी लाइन है बिहार की. एक्चुअल मेरे हिसाब से पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए 18,000 या 20,000 रुपये. क्या होता है आजकल, क्या होता है आजकल 18-20,000 रुपये में, बट 6,000 हमने पॉवर्टी लाइन रखी है. तो उसके नीचे 34.17% पॉपुलेशन है हमारी, 34.13% पॉपुलेशन है. If as per me as a layman who's seen the country, दुनिया घुमा हुआ है, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में और पूरे भारत का मैंने भ्रमण किया हुआ है. When I see poverty, I think poverty should be around 20,000 rupees a month minimum. उससे नीचे गरीब है, उससे नीचे आप पेट भरने के लिए कमा रहे हो, you cannot save anything, you don't have any decent life at all. So if that is taken, probably more than 50, 60, 70% of our country's population may be there. ये जागने वाले स्टैटिस्टिक्स हैं. पॉवर्टी इज हाईएस्ट अमॉन्ग शेड्यूल्ड कास्ट. अब देखो कहाँ है ये पॉवर्टी, शेड्यूल्ड कास्ट. 43.93 फैमिलीज क्वालिफाई फॉर बीपीएल. मतलब आधा आपका शेड्यूल्ड कास्ट, ऑलमोस्ट हाफ आर बिलो इन द पॉवर्टी लाइन. इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस 33.58%, ओबीसीज 33.16%. सो ये दिस इज स्टैटिस्टिक्स. Now comparison between religions, Muslims share of poor is 17.26%. तो 14% मुस्लिम्स हैं आपके स्टेट में, आप बोल रहे हो, पॉवर्टी में 17.26% है. Over 14% of people live in कच्चा houses, of whom about 15 live in huts and another 26 in tin shed houses. तो 14% आपके प्रांत की आबादी जो है कच्चे घरों में रहती है, पक्का घर नहीं है उनके पास, पक्की छत नहीं है उनके पास, टिन की शेड ऐसी झोपड़ी में रह रहे हैं. तो ये भी जो, अच्छा, नाउ कम्स टू एजुकेशन. दोज हु हैव स्टडीड टिल क्लास 8 कंप्राइज 37 ऑफ पॉपुलेशन. सो 37% लोग 8वीं तक पढ़े. 22.6% have studied only up to class 5. Another 14.7 have studied till class 10, meaning more than half the state's population, 52% have studied till class 10 or below. तो आधा बिहार जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जहाँ विदेश से लोग पढ़ने आते थे किसी ज़माने में, 52% of Bihar population, my dear friends, has studied up to 10th or less. तो ये the more statistics, but I think I will leave it here. And move forward. See, when we talk of poverty, we talk of water, we talk of pollution, we talk of education, we talk of health. This is to create an inquisitiveness into you. You may be from privileged families, and when you speak like this in a group discussion, in a lecturate, या जब ये WhatsApp अंकल आंटी आते हैं घरों में, दिवाली वगैरह पे या शादी में इतनी स्टॉल लगी होती है,
शादी वादी में, then you can tell them कि थोड़ा सा let's cool down because our own people are living in abject poverty. चलो अभी चलते हैं ये दिल्ली. it's a क्या है, it's a tennis match between the government and the LG, government and the courts कि you pass, I will send it back to you. Nobody takes responsibility of pollution in the capital of India. Same is Bombay. So these measures like odd, even, these are just कि you have to show you are doing something. मुझे जो लगता है all these measures are just to show the public कि we are doing something. Actually there's nothing, there are no long-term measures to fight this. You can see 7 day, this is 7 days का AQI है दिल्ली के ऊपर. This is from of course Indian Express. So you can see ओखला, नेहरू नगर, द्वारका, RK पुरम पूरा उन्होंने कवर किया हुआ. What contributes to PM 2.5 in Delhi on November 7? Biomass burning 37.85, and then transport, residence, industry, waste burning, construction, road dust and others. तो ये करके इन्होंने ये कर दिया है. तो anyway, now we will move ahead. In a first, RML hospital sets a weekly pollution OPD. RML राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली का, दुनिया भर पूरे देश से लोग जाते हैं इलाज के लिए, दिल्ली के तो जाते हैं. वहाँ पे they are going to start a weekly pollution OPD to address growing number of patients experiencing health issues due to toxic air. तो 9 साल तो जिंदगी के वैसे कम हो जाते हैं आपके if you stay in Delhi. चलो, now we will leave politics aside and we will move to the editorial. I have few interesting things to discuss with you in the editorial sphere. Here it is. Steady in a changing world, odd even again. Then we have deep flake challenge. So this is steady means सही चल रहे हो in a changing world. Despite several challenges, Indian economy has been resilient. So this is written by Dharma Kirti Joshi and Deepti Deshpande. They are principal economists, CRISIL India. Okay. As growth potential across advanced countries slows, India can retain and perhaps improve its growth prospects by building infrastructure, both digital and physical, and undertaking growth enhancing reforms to improve ease of doing business, besides latching on to the tailwind from diversifying global supply chains. So we have to continue to build our infrastructure. Digital infrastructure is to get people at least 2G. बहुत जगह अभी भी network नहीं है. So imagine if the entire country gets connected to 5G. At the same time, we have high-speed rail, high-speed road, wonderful airports, seaports. These are lifelines of any country. मैं हमेशा कहता हूँ रोड और रेलवे लाइन ये जैसे हमारे खून में नसें हैं ना, हमारे शरीर में जैसे खून दौड़ता है जिससे कि हम चलते फिरते रहते हैं, ये रहता है. These are like this. So economy moves along this. So we have to continue to invest in this infrastructure, and we have a long way to go. But we are doing okay. So that's nice. Odd even again, in implementing road rationing, Delhi must learn from its past. Its experience could help other cities with air pollution burden. So ये road rationing का है, उन्होंने rationing कर दिया. But these don't have much impact. Now trucks are not allowed. Suddenly आप कहते हो कल से ट्रक नहीं आएंगे. अब किसी का सामान आना है, कोई ट्रेडर है, किसी का पर्सनल लगे जाना है, कैसे? इट्स लाइक दैट डीमोनेटाइजेशन, लाइक द कोविड लॉकडाउन, भाई कल से नहीं होगा. अरे हाउ मच विल पीपल सफर? सो दिस ऑल्सो इज सरप्राइजिंग कि सडनली रात को ऑर्डर आ जाता है भाई कल से या परसों से ट्रक्स अलाउड नहीं होंगे. व्हाट इफ समबडी हैज मूव्ड द लगेज फ्रॉम बैंगलोर ऑन पोस्टिंग एंड इज इन दिल्ली, तो ट्रक विल स्टे आउटसाइड दिल्ली नाउ. सो दे आर plus business community, their cargo moves. So we have to really find better solutions. Deep fake challenge we have covered yesterday also. Now we come to sickness in the air. This is an article written by Rajiv Dasgupta. He is a professor, Center for Social Medicine and Community Health, GNU. So he says air pollution plays a key role
in the genesis of chronic diseases and cancer. It affects poorer people and countries more. So poor people suffer the more. Whether it is drought, whether it is floods, whether it is hypertension, whether it is demonetization, whether it is आपका lockdowns and also poor air. So their jobs just go. Their jobs just go. Plus health, where they don't have health insurance, they can't go to hospital. So they go to some doctor छोड़ते नहीं है. They will charge them. And government dispensaries, I showed you the long line. कल परसों मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी गुड़गांव के सिविल हॉस्पिटल में. इन द मैटरनिटी वार्ड देयर वर 3 females to 1 bed. 3 females lying on 1 bed in Gurgaon Civil Hospital. चलो, तो how to kill industry? This is of course an article by Arvind Dattar. He is a senior advocate and has appeared for some of the gaming companies. तो ये gaming के ऊपर आपको पता है काफ़ी इस पे I have covered this issue on video games and betting. This is a big industry. It's many billion dollar worth industry. But there are many cases dealing with industry in the courts. So exorbitant tax demands with no basis in law are crippling blows to companies. Hurt India's image as a reliable investment destination. तो उसमें I believe it's 24% GST. But I must tell them education is 18% GST. 24% GST is if you play this poker and rummy games online, you pay whatever you earn, you pay 24% to the government. In case of education, you take a course, you pay 18% to the government. And jewelry is only 3%. Jewelry is only 3%. You can go to any jewelry shop, carry money in your bag, and he may even give you without the GST also. GST is if you pay digitally, then they will charge you 3% GST. So anyway, so he is talking of the online gaming industry, why it is no, it is 28% GST, sorry, not 24%. For betting and gambling, online gaming, it is 28% GST. Now, we have a very interesting article from Uday Bhaskar. He is a retired admiral from Navy, and he talks of US 2+2. See, we have, मैंने बोला 2+2 हमारे पास we have with Russia and US. When we say 2+2 means the foreign and defense, they come together. Foreign ministry, because इनका काम, whether it's procurement, threat assessment, deployment of forces, or understanding each other's nature of working in Indo-Pacific, Indian Ocean region, anywhere else. So 2+2. So US, we are going to have 2+2 meeting with US very soon, where Rajnath and Jaishankar will receive their American counterparts, Lloyd Austin and Antony Blinken. Blinken से तो Israel पे बात हो जाएगी, because he has paid 2 trips to Israel and all the neighborhood, trying to solve, or I don't know, add fuel to the fire. I won't know that. But defense, diplomacy and technology. Plus, we will also be sharing our thoughts on Indo-Pacific and what is happening in Gaza. तो ये बड़ी interesting है, an important punctuation with US. Okay. Army is replacing the Chetak and Cheetah helicopters. They have done amazing amount of work. Small helicopters, very reliable. I have flown many times on these Chota helicopters, and the kind of flying these pilots have done, especially in high altitude areas, in Siachen Glacier, on line of control or insurgency areas, really commendable. So we are going to phase them out very slowly, and we are set to induct LUH, that is light utility helicopters, and to ramp up our UAV fleet within the next 5 years. So one squadron of LCH, light combat helicopters, has been inducted, and more will be procured. कल परसों मैंने बताया था, we are getting 6 Apaches from US, and first one will come in February next year. So I keep covering defense related news also. थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. Manipur is again on the boil. It's almost now, it started on 3rd May. मैं डेट भूलता नहीं हूँ. May, June, July, August, September, October, November, 7 months and more. But Manipur में अभी भी there has been some abduction and gunfight, and many places internet is still banned.
Okay. Now, Supreme Court has banned firecrackers across country. By the way, ये मैं बता दूँ. खैर, हमारे यहाँ बैन का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अभी थोड़ी देर में कोई ना कोई चला देगा यहाँ पे. इंडिया इज हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस ग्लोबली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो थोड़ी देर के बाद आपको हाइपरटेंशन की भी बताऊंगा. I keep raising health issues because your generation must know. Firstly, you become wise yourself, and please, that is the only way you can take care of your parents and grandparents. You must ask their health. तो कैंसर भी मैं कवर करता हूँ. Very frankly, I've covered cancer in women and cancer in men in many of my classes. कि what are the causes and how we can get testing. Same is with hypertension, a silent killer. So we are really as far as TB, hypertension, and cancer, diabetes, heart attacks, we have the maximum in the world. So this is a WHO report which say on global TB. They say that staggering 27% of global burden is in India. Overall, 30 high burden TB countries accounted for 87% of world's TB cases. Among the top 8 high burden countries are Indonesia 10%, China 7%, Philippines 7%, Pakistan surprisingly only 5.7%, Nigeria 4.5%, Bangladesh 3.6%, Congo 3%. India recorded 2.8 million cases, that is 28 lakh people of TB, with case fatality ratio of 12%. The best estimate, the number of deaths in India from TB were 3,42,000. So tuberculosis, I have covered this issue many times in my class, how tuberculosis contracted, what is the medicine, what can be done, and इस पे थोड़ा सा हमें तवज्जो देनी चाहिए. And this pollution adds to TB problem. Israel Hamas, the war is going on in the Gaza city now. They are almost in fighting is going around the cities now, and looks like that northern Gaza, at least Israel will take over and be responsible for security there, so that any chance of Hamas recuperating in that area and launching attacks on Israel from that particular part will be nullified for some time. So, but this is a dirty war. There is a series on Netflix. मौका मिले देख लेना. Father, I am watching that these days. So this is revenge. Eye for an eye. So this will continue till the time there's no leader who comes out and who appeals for peace and truth and reconciliation. जैसे South Africa में हुआ था, truth and reconciliation. That is the only way forward. Blinken is seeking G7 consensus on Gaza fighting at Japan summit, where G7 countries are beginning for 2 days. Blinken is there. UN Security Council again fails to agree on a resolution to stop the war. Imagine we cannot get a resolution to stop the war. So UN Secretary General Antonio Guterres has been very, very vocal on trying to stop this humanitarian crisis. At least he says, let's have a humanitarian ceasefire. Let's have a humanitarian pause in the war. But Western countries led by US, UK are not interested in any ceasefire now. डेथ टोल ये हम हर रोज़ कवर करते हैं. पैलेस्टीन 10,300 and more than 20,000 injured. Cheaper Russian oil helped Indian refineries save 3.3 billion in H1 of financial year 24. So this was a very good step. When it was going on and we were covering the Russia-Ukraine war in my live classes, I was always saying this कि फाइनली हमारे इंटरेस्ट सुप्रीम है. हमें कहीं से भी चीप तेल मिलेगा, वी शुड बाई इट. इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है. इकोनॉमी डजंट सी आइडियोलॉजी. सो वेर एवर वी विल गेट चीप ऑयल, वी मस्ट बाई इट एंड पास ऑन द वॉट एवर. इफ देयर आर विंडफॉल गेन्स टू द कंपनी, दैट मस्ट बी गिवन टू द कंज्यूमर्स ऑल्सो. सो नाउ वी कम टू द hypertension map of India. A new study finds significant variations in occurrence and treatment of hypertension among Indian states and also districts within states. So hypertension, I keep telling you, is the silent killer. It's silent killer and इसका आपको पता नहीं चलता है. So
Hypertension, national level data shows that doctors across the country already know a large number of those with hypertension do not get diagnosed. ये हमने कवर किया था पिछली रिपोर्ट में कि पता ही नहीं है, एक दिन थैंक यू हो जाता है, एक दिन थैंक यू हो जाता है, घर वाले रोने लग जाते हैं, ये नहीं पता ये हाइपरटेंशन का पेशेंट था एंड विश समबडी हैड चेक्ड हिज बीपी कपल ऑफ ईयर्स अगो. वो नहीं करते हैं. Among those who get diagnosed, many get diagnosed कि आपको जो hypertension है, but treatment नहीं लेते हैं. Few are able to control their blood pressure. Only very few. Only one in three receives a diagnosis. So out of three, only one gets a proper diagnosis, and 1 in 5 get treated. 1 in 12 achieves blood pressure control. These are very sad states. Very sad states on our population, health of our population. So study found that prevalence of hypertension was similar among north and south, but was higher than national average, 29.9 in population in southern states. Southern states mein it was higher. So it just requires a BP machine and reduce intake of salt. Simplest thing. 1 week, no salt, and to a large extent your blood pressure can be controlled. I talk of 4 poisons, 4 white poisons. Please be aware of them. Salt, sugar, maida, and butter. Butter means oil, any cooking oil. These 4 are white poisons. इसको बहुत regulated उसमें you have to, especially salt and sugar. Now we have been speaking of this food grain, again extended by 5 years. The cost of this over the years is going to be humongous. It has been extended. This is PMGKY, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. ठीक है. And NFSA is National Food Security Act of 2013, would be extended for next 5 years. The cost, various estimates, is going to be in thousands of crores. It gives 5 kg food grain, 2 rupees per kg, 3 rupees per kg, something like that, the rate. Okay. So the cost to the national exchequer is going to be huge. Somewhere it was around 13,000 crores, or I don't know, 13,900 crores is likely to be the cost of this. And so this is a costly scheme, and when you have such big ticket schemes, then it takes away that much of money from available money with the government of India, which can be invested in health, education, infrastructure, other things. Chalo, give me a thumbs up. Now we move to our second newspaper. I will see your questions. I will see. देखो कितना तुमको ज्ञान आ गया. बता रहे हैं 5 gram is required per day. We have been covering all this. We have been covering all these issues. So I'm glad. It is glad that you people are remembering all this. Bihar 65% reservation after the caste survey. 65% reservation. So they have given some calculation कि this many people are poor, backward, and OBCs. Okay, now we move to the Hindu, and again an analysis of the Bihar caste survey. Bihar caste survey is there. Highlights I have given you. More on this, you can do research, or maybe I will take a special class. If we start our special classes, then we will take a class on this. Okay. Now, this is the editorial. The problem with 70 hours a week line. This has received fair amount of criticism from people across the board. When Mr. Narayan Murthy, founder of Infosys, said that Indian youngsters must work for country, as though we don't work for our country. Firstly, that statement itself was uncalled for. Everybody works for the country. I want to work 70 hours a week. Said, this is my country, I want to work. 70 hours a week is criminal, and it will defy all international labor organization laws. 70 hours a week. That means if you have one Sunday, 10 hours, more than 10 hours per day.
So, this has been receiving a lot of criticism. There's a difference between somebody who works for salary and somebody who owns a company. जो कंपनी का ओनर है वो 16 घंटे काम करता है बिकॉज इज एंटरप्रेन्योर, वो उसका बेबी है वो कंपनी. But when a person works on salary, he has his wife, he has children, his entertainment, his other things also related to his, and his whole health. Anyway, the King of Bhutan is here. King of Bhutan is here. So this is an editorial on Bhutan. Closer together, India and Bhutan can change the development story of the region. So Bhutan, a very tiny kingdom, but very important, lies in between China and India. And China is making a lot of efforts to woo Bhutan away from us and also solve the issue of border issues with them. So Bhutan is very important to us, not only from the chicken neck point of view, Siliguri corridor, which is a very, very small corridor. If that corridor gets cut off, rest of North India gets cut off. That is why our linkages through Bangladesh are so important. Anyway, second one is on ceasefire. This is on from being a victim of terrorism, Israel has turned into a ruthless aggressor. That is Israel, and they have been not only have they taken away land of Palestinian people, but they have over the years they have killed thousands and thousands of Palestinians. So more than 10,000 people killed and 23 lakh people in Gaza, and the UN calls it graveyard for thousands of children, a living hell for everyone. This is what the UN calls, but nobody is prepared to listen to UN. So ceasefire. Can we cease fire? I don't think. Ceasefire tab hogi जिस दिन US will decide and we tell, and Israel also feels काफी हो गया. But Israel Prime Minister is going. Let me tell you this. The public anger within Israel against their government, which is fighting a war, is absolutely visible in the social media and otherwise. Now, we'll discuss the Qatar issue, जिस पे मैंने पॉडकास्ट किया. बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट. दोज ऑफ यू हैव नॉट सीन इट, प्लीज सी इट विद द सीनियर जर्नलिस्ट विक्रमजीत सिंह, senior journalist who understands this issue, who knows the issue. Now, this is by Talmiz Ahmed. He was former ambassador of India to Saudi Arabia, Oman and UAE. तो ये इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं. He is an IFS officer and he's been in the Muslim world for so many years. So he writes on this issue. ये इन्होंने लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया है इंपॉर्टेंट चीज़ें. सो ही सेज दैट while the sense of shock is understandable, the outburst, rage and prejudice serves no useful purpose. The rage and prejudice, क्योंकि शुरू से तो आ गया ना, ये मुस्लिम कंट्री है, वहाँ लॉ नहीं है, कतर को फोड़ दो, चढ़ाई कर दो, यहाँ तो ऐसे शुरू में व्हाट्सएप पे ऐसे शुरू हुआ था ये पूरा इशू. सो इससे दिस डजंट सर्व. Even TV, abhi they have been told to keep quiet, but they also were ballistic on this issue. He says doesn't serve anything. We would do well to note that Qatar, though a small Gulf state, has close ties with US and other. US की सबसे बड़ी एयर बेस है कतर में, and is very close to Iran and Turkey. It has been in the vanguard of regional diplomacy for over 2 decades. 2 साल से, 2 सदियों से, 20 years से, 2 decades से they are in the forefront of regional diplomacy. Can you imagine? Taliban US talks were held in Doha. तालिबान का हेडक्वार्टर दोहा में था, हमास का हेडक्वार्टर दोहा में. सो दोहा इज अपियरिंग टू बी अ प्लेस वेयर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी टेक्स प्लेस. एंड उन्होंने बहुत सक्सेसफुल वर्ल्ड कप भी किया अभी. एंड छोटा किंगडम बट वेरी पावरफुल स्टेट. नाउ इट सेज फॉलोइंग दिस वी शुड accept that the espionage case and the role of Indian naval veterans would have been thoroughly investigated and sentence pronounced only after the basis of hard evidences, however painful this might be for us. यार ये समझ लो भाई, ये प्रॉपर कोर्ट है, प्रॉपर लॉयर्स हायर किए गए. इंडियन एम्बेसी वॉज फुली इन्वॉल्व इन दिस एंटायर थिंग with our 8 नेवी veterans. So without evidence, the court has not given just कि यार वो इंडियन, वहाँ 8 लाख इंडियन काम करते हैं, 8 लाख इंडियन. So however hard it may be for us to believe, but the court has acted on some hard evidence. Now security issue.
My understanding of this unfortunate matter is as follows. This is ex-India's ambassador talking. First, this is a standalone security issue and the sentence have no link with bilateral ties with India or development in the. So पहले तो हमें सोचें standalone issue है. Probably they got caught into it, they got committed to it. It is omission or commission, one doesn't know. ठीक है. But it is not India's policy. India ने कोई गलत काम नहीं किया. Some people have done it. We will go ahead with it. And it should not affect the bilateral relations between the two countries. पहले नूपुर शर्मा केस हुआ था. Qatar was the first one which said, what is this? There is a spokesperson of a party who was talking venom against the prophet on TV. And she was removed and our ambassador had to go and apologize. Many Western Middle East countries, our ambassadors had to apologize for stupidity for a party spokesperson. So same thing should not happen. So abhi aap dekho there's no debate on this issue. Thank God. Now, second, during this period of detention, patience and restraint are called from our media. Communal abuse, name calling and favored speculation serves no purpose. So ये communal angle देने की कोई जरूरत नहीं. कभी भी don't look at these countries कि ये Islamic countries हैं तो ये हमारे एंटी हैं. क्यों हमारे एंटी होंगे? अगर एंटी होंगे तो इतने लाखों लोगों को क्यों जॉब्स देते हैं वहाँ पे? तो ये so we have to wait and watch. He says कि finally we have to wait and watch and this is good time to silence the hate factories in India. We must silence the hate factories in India and should not speak on this issue. And let us hope behind the door diplomacy will get them out sooner or later. And this is the first court of appeal. There are two more higher courts where this case will go. And then it will go to the Emir. Then it will go to the Emir of Qatar. So I am also hopeful, like the ambassador, that they will come back alive. But a lot of lessons to learn from this. Okay. Quota is being covered every day. तो आज नहीं cover करूँगा. But shows only 3% of quota students have visited mental health professionals. And this is related to suicides, quota factory. I think I've spoken enough of in this thing that of coaching industry in India. The coaching industry in India and how it is making a fool of parents and children. Okay. Now we come to MiG-21 jets being phased out. MiG-21 jets, you are aware, they have done human service, but later on they were called the flying coffins. So finally, we are slowly, these squadrons are, phasing out the MiG-21 fighter aircraft and being replaced by Tejas and Rafale. So we've gotten 2 squadrons of Rafale and 2 squadrons of LCA Tejas. So our strength is still 30, which is well below 42 squadrons, which is a sanctioned squadrons, fighter squadrons that Indian Air Force supposed to have. So 42 की जगह हम 30 पे हैं. 30 में भी we are still flying the MiGs. So Air Force, these are costly toys. These are very, very costly. कल मैंने अपाचे हेलीकॉप्टर की कॉस्ट बताई थी. more than 1000 crores का एक हेलीकॉप्टर है. तो आप सोच लो कॉस्ट. Okay. Then of course we have on Manipur, caste survey of Bihar. Then Aditya L1 records first high energy X-ray glimpse of solar flares. That's a very good thing. And curbs on fireworks by Supreme Court binding on all states. So let us wait and watch. उस तरफ क्या होता है. ये बीच में ऐड पहले नहीं आती थी in the live session. My stand on communal harmony is absolutely clear from day one. I have taken a stand and I will remain like this. I am very, very clear. This is what India requires. We need to follow this. ठीक है, ये है, this binds India. The tricolor which so proudly is along on my next to my chair. That this is caste survey. This is Times of India, and then about Mumbai pollution. कवर करते रहते हैं हम. Workable relations between judiciary and government. Judiciary sends names to the government. They pick and choose. So if they like a particular judge, they carry out whatever investigation or background check. उसको approve कर देते हैं. उसके साथ एक और नाम उसको approve नहीं करते हैं. So this is now festering or going on between the courts. Whatever
the courts decide and send to the government for approval. So let us see when this issue will get resolved. AQI stubble burning, ये चलता रहेगा. Let us move to the editorial. What Delhi's grey skies are hiding. This is of course on the 2 decades of battle. The city is still losing airport. Those 20 साल हो गए. City is losing the battle to air, and this affects economy. मान लो मेरी बात. It affects economy. It affects tourism. अंग्रेज आएंगे नहीं फ्लाइट में देख के कि दिल्ली जाना है घूमने, और अरे वहाँ तो भाई जाना हुआ तो क्यों इतना कहा, टिकट कैंसिल करो. सो बेसलाइन पीएफ लेवल्स आर हाई लॉन्ग बिफोर क्रॉप बर्निंग. तो क्रॉप बर्निंग से पहले भी हमारे बेसलाइन बहुत हाई है. नाउ अनदर इशू द पेपर एज रेज इज फ्री बट नॉट फ्री. ये बड़ी सरप्राइजिंग हमारे लॉ है. ये ब्रिटिश लॉज अभी भी चल रहे हैं सीआरपीसी के, वेयर इफ अ पर्सन गेट्स acquitted in court, even if the person gets acquitted in court, he or she has to file a bail plea. और पैसे नहीं होते. बहुत से लोग एक्विटेड हैं, छुट चुके हैं कोर्ट से, वो जेल में सड़ते रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं, ना घर वालों के पास पैसे हैं. तो ये बहुत ही हैरानी वाली बात है. Petition asking for striking down CRPC provision that delays freeing the acquitted must get Supreme Court Government of India note. So I don't know when it will happen, but again, Glenn Maxwell's inning is the highlight across all newspapers. Chalo, so we will. Yeah, I'm planning to bring a civil servant on my podcast very soon. I'm also planning to bring a renowned journalist again. BOCC course will be launched in a day or two. MiG-21 phase out. Yeah, MiG-21 had to be phased out. Maybe I will share this article on my Telegram channel. ये Telegram channel है, मैं बार शेयर कर देता हूँ इसमें, जिसमें कि जो है ना all good articles I find on Twitter and इधर उधर से I posted there for you all to read. Dance of democracy is becoming unbalanced. Yes, sir, we hardly speak about our northern eastern part, what China is actually trying to do. What China is trying to do? ये मुझे समझ नहीं आता है. हमने नॉर्थ ईस्ट में चाइना को ब्लेम कर दो या पाकिस्तान को, हमारा क्या है? What have we done? प्लीज, मेरे को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं है. प्लीज अवॉइड कॉन्स्पिरेसी. वी आर स्टूडेंट्स. व्हाट हैव वी डन एज ए नेशन? ये मणिपुर क्राइसिस को चाइना ने किया? ये मैथीज और कुकीज के बीच में जो ओपन वॉर चल रहा है चाइना ने किया? प्लीज. सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड स्टॉप ब्लेमिंग समवन एल्स. ऑलमोस्ट 95 प्रॉब्लम्स आर सॉल्यूशंस लाई विद इन. पॉवर्टी क्या चाइना ने करी है? सो okay, let me see some questions. Running, push-ups, pull-ups are physical body exercise. Reading, solving problems are brain exercise. And dono चाहिए. You need to have strong arms, strong legs, and here also. Very nice. BOCC course Demon will be every day. It will be everyday classes होंगी शाम को, and I will let you know. You can see my old videos on BOCC. अरे आर्टिफिशियल रेन से वगैरह से ये नहीं होने का यार. पहले हमें जागना है. ये जो डस्ट है हमारे यहाँ, डस्ट, हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट इतना पुअर है. गाड़ी स्टार्ट रहती है, 2-2 मिनट आगे जाओ, फिर एक ट्रैफिक जैम. तो हमारे सॉल्यूशन हमें खुद करना है. वी हैव नो वेस्ट डिस्पोजल. आवर सिटीज आर सिंकिंग, हैव बिकम गटर. वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ही नहीं है हमारे देश में. सॉलिड वेस्ट, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, एवरीवेयर माउंटेन्स एंड माउंटेन्स ऑफ दिस. मैं हैव ट्रैवल्ड इन यूरोप एंड अमेरिका, जहाँ इतना क्रिएट करते हैं वो डिस्पोजल सामान. हर चीज़ पैकेट में आती है, पता नहीं जाता. आई हैव नेवर सीन डंप्स ऑफ गार्बेज एनीवेयर. इवन इन अफ्रीका आई डिड नॉट सी. मैं अफ्रीका में भी ट्रैवल किया बहुत. मैंने कहीं ये कूड़े के ढेर नहीं देखे, कहीं नहीं देखे मैंने कूड़े के ढेर. या कुत्ते हैं, जानवर हैं, उसको खा रहे हैं, पिग्स हैं, कहीं पे. नो वेयर एल्स यू विल सी. I don't know how they are managing, but waste disposal is very, very important issue.
Yes, you're right, Pallav Jha. 4.5% of GDP decline. We are only losing 2% of our GDP because of pollution. हवा में पोल्यूशन है, पानी भी polluted है. No, I've not been posted to Indian IMA as instructor. I was instructor in staff college. मैं staff college में पढ़ाता था, जहाँ मैं पहले खुद student था. Yeah, thank you, Asya. Okay, now let me go back and pick up some questions. Timing of BOCC course uh, is the evenings because इसमें जनरली 7 से लेके 9 o'clock लास्ट बैच, 9 to 10 होता है लास्ट बैच. सो डिपेंड्स ऑन, ले लेते हैं फीडबैक बच्चों से, उसके हिसाब से करते हैं. चलो लेट मी सी. अरे MiG-21 पायलट्स विल स्विफ्ट ओवर टू रफेल एंड तेजस. एक पायलट अपनी लाइफ में कितने हवाई जहाज फ्लाई करता है? ये कोई क्वेश्चन नहीं है. ये कोई जो ट्रांसपोर्ट में है, और नया एयरक्राफ्ट आता है, C-130 आ गए, ये ग्लोब मास्टर आ गया, ये सब आगे बढ़े. तो पहले IL उड़ाते थे, तो दे टेक बिट ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टार्ट फ्लाइंग दैट एयरक्राफ्ट. Your stand on communal harmony is laudable. You have really opened the eyes of many and has shown. Yes, yes, बिल्कुल empathy और sympathy. Thank you. What is the difference between SF and infantry? देखो, SF के लिए आपको वॉलंटियर करना पड़ेगा. स्पेशल फोर्सेस के लिए SF इज पार्ट ऑफ इन्फेंट्री. पार्ट ऑफ इन्फेंट्री, इन्फेंट्री डायरेक्टरेट के नीचे ही आता है SF. बट यू हैव टू वॉलंटियर एंड देन यू गो एंड डू ट्रेनिंग देयर. इफ दे सेलेक्ट यू, आपकी पोस्टिंग आ जाएगी. अदरवाइज यू गो बैक टू योर पेरेंट यूनिट, जिस यूनिट से आप गए हो. तो इन्फेंट्री, आर्मर एंड मैकेनाइज इन्फेंट्री, दीज थ्री आर कॉल्ड कॉम्बैट आर्म्स because they are the ones who get involved in fighting. Real fighting is done by infantry, armor and mechanized infantry. ये इकट्ठे लड़ाई लड़ते हैं. So special forces have special task, and accordingly their training is special. Their allowances are separate. Sir, I see your class today from Allahabad University. Yeah, once upon a time called Oxford of the East, Allahabad University. Sir, I'm in BSc first year and my dream is CDS. So you can join our online course, Rohit Goswami. हमने अभी स्टार्ट किया एक ऑनलाइन CDS कोर्स अलॉन्ग विद SSB ओरिएंटेशन. वो भी क्लासेस बीच बीच में मैं आपके लिए लाता रहूँगा. सो जितना जल्दी करो, ये मैं बार बार आपकी जनरेशन को कहता हूँ, बी प्रोएक्टिव. वन हैबिट यू कैन पिकअप फ्रॉम मी इज बीइंग प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि आप 2-3 साल पहले जागो. उस लेट फाइनल ईयर में मत जागो. फिर क्या होगा, रिटर्न के लिए कहीं कोचिंग में पैसे वेस्ट करोगे. तो स्टार्ट नाउ. सो एन ऑनलाइन कोर्स 3-4 thousand रुपीज़ फॉर 4 months इज नथिंग. इट्स पिटेंस. इतने तो हम चाय पकौड़े वाले को दे देते हैं, कॉलेज की कैंटीन में खर्च कर देते हैं महीने में. सो यू कैन टेक अ कोर्स नाउ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, एंड लर्न, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद दैट जर्नी, सो दैट जब आप फाइनल में ईयर में आओ, रिटर्न भी क्लियर हो, SSB भी क्लियर हो. One hour office class exercise in class is compulsory. This is Pallav Jha from Amsterdam. Very good. Recovery of weapons in Manipur, just about 25% have been recovered. So 4 to 5 thousand weapons are still not traceable. Thank you, Sundar Kholia. Jain sir, it's great to see you in your second innings. Inspiring, blessed to work in your kind command at NAMS. अच्छा,
बहुत से सोल्जर्स जो मेरे साथ मेरी टीम में थे, दे फॉलो मी ऑन यूट्यूब और अटेंड माई क्लास और द चिल्ड्रन अटेंड, सो दे से कि सर मज़ा आ गया आपसे बात करके. पीपल स्टिल टॉक अबाउट, या आई वॉज वेरी वेरी अनकन्वेंशनल. आशिमा सक्सेना, गुड मॉर्निंग, बड़े दिनों बाद आई एम सीइंग आशिमा हियर. सर जी लॉन्च टू, अभी लॉन्च कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स. ये इकोनॉमिक टर्म्स पे आपने आपने जो लिखा है, जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ये मैंने पूरी क्लास ले रखी है अन अकेडमी. इकोनॉमिक टर्म्स में मेरी क्लास है यूं की यूं, बहुत सिंपल भाषा में, कि पर कैपिटा इनकम क्या है, जीडीपी क्या है. ठीक है. सिद्धांत तिवारी, सर माई इंग्लिश नॉट इम्प्रूविंग, आई स्पीक इन. देखो, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड ऑल इज वेरी स्मॉल सोल्यूशन. यू नीड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स विद whom यू कैन कम्युनिकेट. लैंग्वेज आती है प्रैक्टिस करने से. सो फॉर दैट, दैट इज वाई आर कोर्स वेयर देयर इज लॉट ऑफ पीयर लर्निंग. सो आप फोन करके अपने दोस्तों के साथ अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के यू कैन टॉक टू ईच अदर. सो लैंग्वेज इज लर्न बाय प्रैक्टिस, नॉट बाय जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर. थैंक यू प्रेशियस. थैंक यू शिवम. थैंक यू सीमा. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. चलो, तो मैं वंस अगेन सर, आई हैव सिक्स पैक एब्स एंड नाइस बाइसेप. सर एनडीए में मेडिकल प्रॉब्लम होगा? यार पहले पास कर लो एसएसबी. वो सिक्स पैक नहीं देखते एसएसबी में. उनको पहलवान नहीं चाहिए एसएसबी में. वो सिक्स पैक बन जाएंगे बाद में, बनने होंगे तो. सो मोर यू नीड इज सिक्स पैक्स हियर, यहाँ पे. थैंक यू सुमित, थैंक यू वेरी मच. कहता है सर बिकॉज ऑफ यू मैंने सबको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाल दिया और आपका चैनल सब्सक्राइब करवा दिया. थैंक यू. थैंक यू. फॉर ये समथिंग डीप इनसाइड मणिपुर पे यू कैन सी माई पॉडकास्ट विद अमित बंसल. देख लो आप. मणिपुर पे पॉडकास्ट है मेरा. बहुत क्लियरली ही इज लेइंग आउट, ही इज गिविंग हिज एक्सपीरियंस ऑफ ए यंग ऑफिसर इन मणिपुर. हाउ टू बिकम इंस्ट्रक्टर इन इंडिया में, पहले एकेडमी में आ जाओ. पहले एकेडमी से पास आउट हो जाओ, फिर बताऊंगा. ये भी अच्छा बैंक, गुड ऑब्जर्वेशन. वन ऑफ द इश्यूज ऑफ पोल्यूशन ट्रैफिक इज द सेंट्रलाइज कल्चर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑफ फ्यू मेजर सिटीज लाइक एनसीआर एंड स्टेट कैपिटल. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. या मेनी टाइम्स यू वी गेट टू ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर विपुल, डिपेंडिंग ऑन ऑपरेशनल रोल. वन ऑफ माई एल्डर ब्रदर हर्ष कुमार वॉन्ट्स टू ज्वाइन योर क्लास, तो ही कैन ज्वाइन. ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले. Atul, yesterday I took part in inter-college debate. I came second in my batch. Excellent. Congratulations. Sir, what is the manly क्वेश्चन आज टॉपिक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? पता नहीं यार क्या पूछ लिया तुमने आशीष रजावत, मुझे ही नहीं समझ में आया. वेरी गुड. जम्मू इज क्लीन. जम्मू कश्मीर इज वेरी क्लीन. पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ बहुत बहुत बड़ा इशू है. एंड साइकिल्स, और सिटीज़ 5-10 किलोमीटर में शुड गो टू योर वर्क ऑन साइकिल. बट यहाँ साइकिल वाले को कोई ठोक देगा, मर जाओगे आप साइकिल पे. साइकिलिंग इज सो डेंजरस इन आर सिटीज़. अदरवाइज वर्ल्ड ओवर, इवन इन प्लेस लाइक सैन फ्रांसिस्को, क्या साइकिलिंग की ट्रैक्स हैं वहाँ पे. बाई ऑन हाईवेज ऑल्सो द साइकिलिस्ट हैव राइट ऑफ वे ऑन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. सो साइकिलिंग वी हैव टू एनकरेज साइकिलिंग. साइकिलिंग वी हैव टू एनकरेज. चलो, तो अगेन थैंक यू वेरी मच.
हाइट ठीक है, हाइट, ये हाइट वाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता एनडीए में, आप पहुंच जाओ। पहले एसएसबी क्लियर कर लो। समबडी इज आस्किंग अबाउट हाइट, 165 सेंटीमीटर बहुत है। आई एम प्लेइंग सेकेंड इनिंग्स लाइक मैक्सवेल। आई विश आई कैन प्ले लाइक दैट। So the calligraphy of your teaching were imprinted in the fabric of my mind. That is Vaishnavi. Thank you, Roshan. My podcast on Pakistan is coming very soon. Very soon पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान पे पॉडकास्ट लेके आऊँगा। चलो, सो थैंक यू वेरी मच। टिप से कुछ नहीं होगा। स्क्रीनिंग वगैरह के लिए अगर आप हमारा BOAC कोर्स देखोगे तो आप हैरान हो जाए। कल क्लास चल रही थी हमारी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की, लेफ्टिनेंट कनिनिका ठाकुर ले रही थी। 3.5 hours, एटलीस्ट 3 घंटे निकल चुके थे क्लास के। एंड पूरी क्लास आई कुड सी 10 हैंड स्टिल रेस्ड। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज ऑनलाइन, ऑनलाइन घर से बैठे हुए। ठीक है, सो डोंट वेस्ट योर मनी हेयर एंड देयर। ठीक है, थैंक यू। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। चलो, वी हैव रियली एक्सीडेड द टाइम टुडे। ऑल द बेस्ट टू यू।